Next exercise is exercise 15.3. Here also you have to draw the graph. You are given table here और आपको graph draw करना है इसमें भी same. First one is draw the graph for the following tables of values with suitable scales on the axis. First you have given cost of apples, that is number of apples and cost, right? So you have to draw the graph. क्या करेंगे हम, जो हमें ऑलवेज वी टेक इट लाइक दिस कि नंबर ऑफ एप्पल्स को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे एंड कोस्ट विल टेक ऑन वाई एक्सिस, राइट? सो लेट्स ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल. X axis and y axis. On x axis we have to take cost of apples. Sorry, first we have given here number of apples and don't forget to mention it. I'm telling here first question, number of apples, and on y axis you will take cost in rupees. Now you will take the scale accordingly, like number of apples are given 1 to 5, so you will take here 1, here you will take origin O, 1 2 3 4 5, and on y axis it's given the gap of 5 5. Make sure अगर आपको टेबल में equal gap नहीं भी given, then also when you will take the gap on the y axis you will take equal gap. आप हमेशा equal gap लेंगे चाहे equal gap given है question में या नहीं है. अगर equal gap नहीं भी given but you will take the equal gaps. So here we can take the gap of 5 5, 10, 15, 20, 25, 30, but maximum value is 25, so it's enough. So number of apples is given like one apple की जो cost है that is given 5. So we'll take it like this, x1 y5, this point 1 comma 5. Then cost of 2 apple is given here 10, so x2 y10, x3 y15 is given here, x4 y20, x5 y25. So now you have firstly हम plot करते हैं points को. यहाँ पे 5 points plot हो चुके हैं. Now join it. When you will join, you will get the graph. Okay. आपको यहाँ पे एक linear graph मिलता है because all of the points lie on a single line, right? So this was the question first, part A. Second is also same. Second में आपको given a distance, second part of the question. See, second part of the question that is given here, distance traveled by a car. Time is given that we will take on x-axis. Distance is given in kilometer that will take on y-axis. Here already given the equal gap 40, 80, 120, 160 ने 40 40 का gap लिया है, so आप भी ऐसे ही कर सकते हैं. ठीक है, we'll start from 0. Again we'll take the, first of all we'll take the x-axis and y-axis. On x-axis we'll take time, we'll mention properly in hours. One thing I forgot to tell you, we didn't mention there in the previous question also. See, we forgot to mention the scale 1 unit length. आप मोस्टली क्या करते हैं, आप हमेशा y एक्सिस का ही बताएंगे क्योंकि कोस्ट गिवन है यहाँ पे, बाकी तो है ही आपके पास 1 2 3. ठीक है, so 1 unit length is equal to 5 rupees. Rupees 5. 1 unit length is equal to rupees 5. So please here do the correction. By mistake I mentioned here 520, it should be 525, right? Now we were doing next one question, next part. So उसमें हमने क्या लेना है,
X axis पे we are going to take the time mentioned properly in hours, and on y axis we have given distance in kilometers. X axis it's particular given 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. On y axis it's will start from 0 and we'll take the gap of 40 40 40 80 120 160. Then we'll draw the graph and we'll draw the line, and like the same as the previous one you can do this. ठीक है, 6 a.m. पे 40, 7 a.m. पे 80, 8 a.m. पे 120 and 9 a.m. पे 160. You will join it, so you will get the graph. Now here, see, here we have given some question on the basis of it. How much distance did the car cover during the period 7:30 a.m. to 8 a.m.? आपको बताना है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम 7:30 a.m. टू 8 a.m. सो हम कैसे बता सकते हैं? बाय जस्ट शोइंग द ग्राफ पेपर. 7:30 ये हो गया, 8 ये हो गया. ठीक है, सो आप जाएंगे इसके मिडल में लाइक दिस. आप 7:30 का जो आपके पास है 7:30 से 8 a.m. का आप क्या नोट डाउन करेंगे? यू विल नोट डाउन द डिस्टेंस. ठीक है, 7:30 a.m. पे इट इज बिटवीन 80 एंड 120. 80 एंड 120 के बीच में आएगा 100. तो 7:30 a.m. से 8 a.m. तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ? इट्स 20 किलोमीटर, राइट? इट्स 20 किलोमीटर. 7:30 a.m. पे 100, 8 a.m. पे 120. तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ 7:30 से 8 a.m. में? 100 से 120, दैट इज 20 किलोमीटर. नेक्स्ट पार्ट इज हियर. What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start? आपको टाइम बताना है कि क्या टाइम था when जब तक कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, सो 100 किलोमीटर पे हमें पता है कि कितना टाइम हुआ 7:30, और स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कितना टाइम स्टार्टिंग था. इट वाज फ्रॉम 6 a.m. जब भी स्टार्ट किया होगा फ्रॉम 0 to 6. ठीक है, यू कैन टेक योर किंक लाइन. आपके पास 6 a.m. से 7 a.m. एंड 7:30 कितने आवर्स कंप्लीट हुए? राइट, इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग हुआ 6 a.m. से 6 a.m. to 7 a.m. 7 to 7:30 इट विल बी. सो हमें बताना है कि what was the time, sorry, it is given here, what was the time when the car had covered distance of 100 kilometers in the starting point. स्टार्टिंग पॉइंट से 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करने तक का टाइम, उस टाइम पे क्या टाइम था? एट दैट टाइम यू वर टू टेल द टाइम. व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एंड द टाइम वाज 7:30 a.m. दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट, राइट? Next question is again C part of the first question is here. Interest on deposit for a year. Interest on deposit for a year. Here you have given deposit and interest on that deposit. Like 1,000 पे deposit given है 100 rupees interest, 2,000 पे 160. हमें ध्यान रखना है गैप कैसे लेना है, हमें इक्वल गैप लेना है. ठीक है, so on x axis will take deposit and on y axis we'll take simple interest. Deposit, that is also in rupees, and simple interest, that is also in rupees. When we'll take the equal gap here, 1,000 से start करेंगे, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 like this. And on y axis we also take the equal gap. So यहाँ पर आपको 80 80 का gap given है. You can take like 80,
160, 240, 320 and 400, right? 80 का गैप लेंगे, यू कैन सी द टेबल ऑफ 80. आफ्टर दिस यू हैव गिवन कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपीज तो इंटरेस्ट आता है 80. सो दिस विल बी द पॉइंट. When the deposit is 2000, then the interest is 160. This point will be the second point. When it's 3000, sorry, then it's 240. When it's 4000, it's 320. When it's 5000, it's 400. Join it, you will get the graph. Right? After that, you have to give the answer to the questions. And first one is given here. Does the graph pass through the origin? So let's check it first of all. इसको check करते हैं. This is the origin. Yes. Yes, it passes through the origin. Okay. Second part. You use the graph to find the interest on rupees 2500 for a year. आपको बताना है कि अगर 25 का 25 रुपीज 2500 डिपॉजिट हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा. सो यूज द ग्राफ फॉर दिस. अगर आप 2500 मतलब 2000 3000 के बीच में जाएंगे और वहां से y की वैल्यू, y पे है इंटरेस्ट, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो 2500 अगर आप लेते हैं तो ये किसके बीच में आएगा, 160 और 240 के बीच में, राइट. 160 और 240 के बीच में आपके पास आएगा 200. ठीक है. इट विल बी 200. तो इसका मतलब अगर 2500 का डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 200, राइट. नेक्स्ट दे आर आस्किंग टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर. अगर 280 इंटरेस्ट चाहिए देन हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट. तो मनी कितनी होनी चाहिए. अब हम वाई एक्स को चेक करेंगे. 280 हमें क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, 240 और 320 के बीच में. अगर आपको 280 इंटरेस्ट चाहिए तो आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, बिटवीन 3000 एंड 4000, दैट इज 3500. इट्स आंसर विल बी 3500. अगर आपको 240 और 320 के बीच में 280 पे डिपॉजिट करना है देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम ग्राफ से. अब वाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे विच इज 3500 बिटवीन 300 एंड 3000 एंड 4000 इज 3500. इसका मतलब आप कितना डिपॉजिट करेंगे, 3500.